Okay, now let's start with module 1. Okay, module 1 is first is analog electronics. Analog electronics you will have diode and application. So diode पे you can get two question every time. दो question आते हैं. One question is directly based on Zener diode and its numerical. Zener diode का सर्किट डायग्राम पूछ लेते हैं. फिक्स सर्किट डायग्राम है या उसके साथ उसका न्यूमेरिकल. Another, they can give you theory question of VI characteristics of diode. Okay, sometime they can ask you कि VI characteristics क्या है सिलिकॉन का, जर्मेनियम का. अगर उन्होंने थ्योरी का क्वेश्चन देना होगा तो they can ask you the VI characteristics. और अगर if they want to give the numerical, then they will give you the numerical based on diode current equation. Right? Remember मैंने करवाई थी. id is equal to I naught e raised to power vd by eta vt minus 1. और मतलब लाइक दिस इज कि ये तो तुम्हारा 95% चांस है कि इस पे आता ही आता है जीना डायोड पे न्यूमेरिकल. अब डायोड करंट पे देंगे या फिर वी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड देंगे या फिर इन न्यूमेरिकल दे कैन आस्क यू स्टैटिक एंड डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड. ओके, तो यहाँ से तुम्हारे गिनती के 3 क्वेश्चन बनते हैं. फर्स्ट वन इज जीनर डायोड, सेकंड वन वीआई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, थर्ड वन डायोड करंट इक्वेशन पे बेस्ड एंड उसी के साथ स्टैटिक रेजिस्टेंस एंड डायनामिक रेजिस्टेंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल. राइट, ये दोनों डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड हैं. ये हो गया तो तुम्हारा दिस वन चैप्टर 1 इज कंप्लीटेड. आफ्टर दिस जो उसके बाद आता है तुम्हारा वन ऑफ द क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम फ्रॉम द रेक्टिफायर. रेक्टिफायर में भी दो कैटेगरी के क्वेश्चन है. लाइक एन दे कैन गिव यू आइदर ऑन हाफ वेव रेक्टिफायर या फिर फुल वेव रेक्टिफायर. फुल वेव रेक्टिफायर के चांसेस है 90% और हाफ वेव रेक्टिफायर के चांसेस हैं 30%. सो मैक्सिमम टाइम इन्होंने फुल वेव रेक्टिफायर ही दिया हुआ है. और दे कैन गिव यू द रेक्टिफायर बेस्ड ऑन फिल्टर. फिल्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला यू नीड टू अप्लाई एंड ये फिल्टर का जो फॉर्मूला है दे हैव गिवन इन योर हैंडबुक ऑल्सो. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो जाता है. ठीक है, अगेन इसके जो चांसेस है दैट इज 70 to 80% चांस है कि फिल्टर पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा. 90% इसी टाइप पे आता है. कितने क्वेश्चन हो गए? 2 क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन चैप्टर 1 से, 1 क्वेश्चन फ्रॉम द रेक्टिफायर. अनदर यहाँ से तुम्हें दे देते हैं कि ये दे देते हैं थ्योरी का क्वेश्चन है दैट इज एलईडी फोटो डायोड. ज़्यादातर यही दोनों देते हैं. दीज टू आर द इम्पॉर्टेंट वन. ओके, ये वाला इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा और कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है. ज़्यादा करो तो सोलर सेल पढ़ लेना, बस एक थ्योरी या डायग्राम पढ़ लेना, थ्योरी पढ़ लेना, देन यू कैन राइट ऑन. सेकेंड क्वेश्चन तुम्हारा आ जाता है यहाँ से. ठीक है, नेक्स्ट वन एक बीच में आ जाता है तुम्हारा बीजेटी की जगह मॉसफेट. मॉसफेट से भी एवरी टाइम दे विल गिव यू द 2 क्वेश्चन. 2 क्वेश्चन वो कौन कौन से देते हैं? एक तो दे देते हैं मॉसफेट की ड्रेन करंट की डेरिवेशन. ओके, ड्रेन करंट मीन्स आई डी इज इक्वल टू आई नॉट म्यू नॉट, जो बड़ा सा फॉर्मूला था उसकी डेरिवेशन. और दे विल गिव यू द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मॉसफेट. करेक्ट. ठीक है, अभी मैं सारे फॉर्मूलेस भी बताऊंगी इसी से रिलेटेड. देन 2 क्वेश्चन मॉसफेट पे हो गए, 2 क्वेश्चन इस पे हो गए, 2 क्वेश्चन तुम्हारे इस पे हो गए. नाउ नेक्स्ट वन इज ओपैम्प. ओपैम्प पे ऑल्सो दे विल गिव यू 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस. आइदर दे विल गिव यू इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की डेरिवेशन या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की डेरिवेशन या फिर इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर की डेरिवेशन. सो दीज 3 डेरिवेशन यू नीड टू रिमेंबर. और उसके साथ डेरिवेशन के साथ एक्सप्रेशन के साथ दे कैन गिव यू द न्यूमेरिकल. ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया. सेकेंड क्वेश्चन ओपैम्प में होता है, तुम्हें हर बार बोलते हैं लाइक वी नॉट इज इक्वल टू 3v1 प्लस 2v2 माइनस 6v3. ये ओपैम्प की इक्वेशन देंगे and then after that you need to convert it into the circuit diagram. जो circuit diagram में convert होता है इस तरह से. right, second question ये हो गया. first question यहाँ से हो गया. third question they can give you either from the integrator, integrator से पूछते हैं, और they can give you from the comparator. तो chances अब देखो
इसके तो 95% चांस है कि ये देते हैं, इसके 99% चांस है ये देते हैं, और इन दोनों में से कोई मतलब इसके चांसेस कम होते हैं, 70% चांस होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। ओके, तो दो ही क्वेश्चन आएंगे, कोई भी तीन में से दो ये दे सकते हैं। नाउ वी नीड टू फोकस ऑन दीज टाइप्स, क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस द फॉर्मूले। सबसे पहले यू नीड टू कैलकुलेट डायोड करंट इक्वेशन, राइट? So diode current equation is ID. Diode symbol is like this. This one is anode. This one is cathode. Okay. So ideally anode should be connected with positive terminal and cathode should be connected with negative terminal. Then in that case it would be a forward bias, and in forward bias current will be able to flow. Okay. Now ID formula which you need to remember, that is ID is equal to I naught e raised to power Vd divided by eta Vt minus 1. What is the ID? ID is the diode current, I naught is the reverse saturation current बोलो, or you can say the leakage current, एक ही बात है. Okay. Then next E is the exponential, Vd is the applied voltage across diode. Like suppose here we have applied voltage is Vd, current flowing here would be Id. Eta is the constant and eta value is fixed. Eta is equal to 1 for the case of germanium and eta value is 2 for the case of silicon. Okay. Now next they need to next is Vt. Vt is the basically thermal voltage and will have fixed formula, that is temperature divided by 11600, sorry 2 zeros only, and temperature must be in Kelvin. Okay. Maximum times they'll give you the temperature based on Celsius. You need to convert it into Kelvin. How? By adding 273 to the degree Celsius temperature, then that would be converted into Kelvin. Clear? So this is the formula we have used for the forward bias. If they said for the reverse bias, then it should be negative, but maximum manipul में forward bias ही they'll ask to you. Okay, ठीक है? तो इस फॉर्मूले पे बेस there is 90% chance that question will come. Next one जो maximum students को नहीं पता होता, one of the type of resistance is dynamic resistance and another of the type of resistance is static resistance. Okay. So what is the formula related to the dynamic resistance and the static resistance? As its name suggests, dynamic resistance means it is changing current divided by the changing voltage divided by current, sorry. But we'll have fixed formula which you need to use in the numerical, that is eta Vt divided by Id plus I naught. Okay. Vt I just told you, thermal voltage. Eta I told you, Id is the diode current, I naught is the reverse current. And if they'll ask you the static resistance is Rs, denoted by Rs. It is normally Vt, the diode voltage, applied voltage across the diode divided by the diode current. Clear? So these formulas you need to remember it. Another, as I told you, they can ask you the VI characteristics of the diode. VI means the voltage and current relationship between the diode. Like this is voltage and this is current, right? So it vary from silicon to germanium. Like earlier it is up to threshold voltage it is minimum. When it cross the threshold voltage, current reaches suddenly. Similarly, like this is the case of forward bias and this is the case of reverse bias. It is fixed for silicon, the potential barrier voltage is 0.7, and for germanium the potential barrier voltage is 0.3. So maybe you can consider this one would be the case for germanium and this one would be the case for silicon. Similarly here also, this one is for germanium and this one is for silicon. This value is fixed, that is known as threshold voltage or potential barrier voltage, but reverse voltage is not
fixed. Clear? Now next one, diode. I told you 5% is like this. Basically, Zener diode as a voltage regulator. Voltage को कम या ज़्यादा कर. So there is a fixed diagram, circuit diagram for Zener diode. What is the circuit? कोई भी question आ जाए, okay, you need to draw this one diagram only for the Zener diode. Clear? Now see, just imagine this is your home. Okay, so this is the supply we are getting from the government side. Yes. Okay, this is your load side. Load side means like suppose you are using an AC or bulb, you are using this load, so resistance of that load is RL. This is Zener diode, so voltage across Zener by V. Voltage across load, sometime it is denoted by VL. Okay, VL stands for load voltage, and another time or they can denote by V naught stands for output voltage. Okay, so that depends on the question. Sometime they'll give you VL, sometime they give you the V naught, so both the meanings are same, don't get confused. Clear? Now this is the input resistance or the series resistance. Again, sometime they'll give you ki input resistance is this one, or they'll give you the series resistance is this one. So input side pe connected, so that's why they called it as input. So again, these two things are also same, don't get confused. This is the supply current IS. Okay, yes. Again, for this one, sometime they'll give you the VS means supply voltage, or they'll give you the VIN means the input voltage. Again, these two terms are same. Clear? Okay, now there is two condition. What is those two conditions? Either Vz would be greater than VL, or Vz would be less than VL, right? So according to these two conditions, if Zener diode is more than the load voltage, right, then in that case current across Zener would be less. As you know, power is equal to V into I, Z is equal to Vz into Iz. So Vz ज़्यादा है तो Iz must be less, correct? Voltage ज़्यादा है, current would be less. So in this case, ideally we can consider Iz is equal to Zener diode current is 0, correct? Like suppose here the current flowing in Zener would be Iz and the current flowing here would be load would be IL. तो Zener के across current नहीं है, it means it work as a reverse bias, because reverse bias में current flow नहीं होती, right? If Iz is equal to 0, then Zener diode will work as a reverse bias. So in this condition, Zener diode, if Iz is equal to 0, then Zener diode will act as a reverse bias. So वो diagram, this is the series resistance. Zener diode reverse bias की तरह काम कर रहा है, तो it means there is no such resistance. Okay, so this one would be RS, this one would be RL, this one would be VS, correct? Any doubt? Voltage ज़्यादा है, then current is less. If current is less, then Zener diode act as a reverse bias, means it will act as a open circuit, right? So this is one of the condition. Here the current flowing would be IS, no current is there, so this is IL, correct? Can we say that IS is equal to IL? Yes or no? Next we need to calculate VL. VL would be according to voltage division rule. What is the formula for the voltage division rule? That total voltage कितनी है? Yes, multiplied by the voltage across the load RL divided by the sum of resistor which are connected in series. So RS plus RL. ये फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर इट. इस फॉर्मूले से तुम्हें पता लगेगा कि VL की वैल्यू इज ज़्यादा और VL Z की वैल्यू इज नो. ओके.
नाउ VL आ गया। IS का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बाई R होता है। कितना है VS, रेजिस्टेंस कितना है RS प्लस RL। So in this case PL is not equal to, करेक्ट। एक बार ये चार फॉर्मूलेस लिख लो। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन, Z की वैल्यू कम है, तो VZ की वैल्यू कम है तो IZ की वैल्यू ज़्यादा होगी, राइट। So in this case the Zener diode will be act as a forward bias, और forward bias act होता है तो किसकी तरह बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट, राइट। रिवर्स बायस में करंट नहीं जाता तो दैट विल बिहेव एज ओपन सर्किट, फॉरवर्ड बायस में करंट विल फ्लो सो दैट विल बी शॉर्ट सर्किट। तो अगेन लाइक शॉर्ट सर्किट, तो यहाँ पे आई एम ड्राइंग अ Zener diode and there is RL, right? How much current is flowing here, IS. In the Zener diode, how much IZ, and in the load resistance IL. So if I apply Kirchhoff current law, then in that case would be how much, IS is equal to mean IZ plus IL, yes or no? IS is the current, IZ is the Zener current, IL is the load current. Now in this case the voltage across Zener and the voltage across load, as you can see that these two are connected in parallel, so voltage in the parallel would be same, so we can say VZ is equal to VL, right. Next we need to calculate IS. IS is how much, IS is the supply current, total हमने voltage we have given VS, उसमें से Zener voltage ने कितनी ले ली Z, बाकी बची हुई यहाँ पे गई, राइट। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो गई, VS माइनस VZ डिवाइडेड बाय IS निकालना है तो V बाई R होता है, तो रेजिस्टेंस इज RS, राइट। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू Ohm's law, VL is equal to IL into RL. So for these condition, four formulas you need to use. Now कि कौन से केस में कौन सा फॉर्मूला यूज, मणिपाल में मैक्सिमम टाइम दे गिव यू मैक्सिमम करंट निकालो, मैक्सिमम जीनर करंट निकालो, मैक्सिमम मिनिमम जीनर करंट निकालो, तो जब भी मैक्सिमम मिनिमम होगा तो यू नीड टू यूज सेकंड वाली कंडीशन, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो इन दैट केस यू नीड टू कैलकुलेट वी, यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से वीएल निकालोगे, फिर देखोगे कि वीजेड ज़्यादा है तो ये वाले फॉर्मूलेज यूज़ करोगे, वीजेड कम है तो ये वाले फॉर्मूलेज यूज़ करो, ओके। मिनिमम मैक्सिमम का क्वेश्चन आता है या नॉर्मल क्वेश्चन आता है, मिनिमम मैक्सिमम का आता है तो सेकंड कंडीशन यू हैव टू यूज, सेकंड फॉर्मूलेज यू हैव टू यूज एवरी टाइम, और अगर नॉर्मल फॉर्मूला आता है विदाउट मिनिमम मैक्सिमम देन इन दैट केस यू नीड टू कैलकुलेट वीएल, तो वीएल निकाल के यू कैन जज इट, ये वाली कंडीशन है या ये वाली कंडीशन है, ठीक है। Now see, all your formulas are completed for this one. Next term we get it as rectifier. तो rectifier पे direct formula based, what are the formulas for that? First of all I'll tell you for the half wave and full wave, उसको बताऊंगी for the filters, ठीक है। And none of the formula is given in your hand, you have to all these formulas, right. First one is the half wave rectifier, other one is center tap rectifier, as you know, full type, one is the bridge type, correct. So you need to cram all this, 90% of time they'll ask either center or bridge, but still like number of diodes they are using in the half wave rectifier is 1, okay, and the center tap rectifier is, and in the bridge type rectifier is 4, okay. I'm drawing the circuit, so half wave का transform हो गए, then you will use diode, okay, यहाँ पे तुम्हारे दे, for the center tap again you need to use transformer, then you need to use two diodes, one is above, one is below,
Then in the center tapping, center of the windings, load is. Next is bridge type. In the bridge type, we'll have a kind of Wheatstone bridge. The Wheatstone bridge. So here tie is connected. So in between this load is, इसमें एक साइकिल में ये काम करेगा, इन दिस एक साइकिल में दोनों काम करेंगे, आसपास वो सामने वाले, और एक में ये काम करेंगे. गॉट इट? पॉजिटिव साइकिल में D1 विल वर्क, नेगेटिव साइकिल में D2 वर्क. इन दिस पॉजिटिव साइकिल में D1 एंड D4 विल वर्क, नेगेटिव साइकिल में D2 D3 विल वर्क. एंड इन दिस पॉजिटिव साइकिल चलता है. आउटपुट इज हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हाफ वेव कन्वर्ट हो. इसकी आउटपुट इज फुल वेव रेक्टिफायर. साइकिल में एज आई टोल्ड यू, पॉजिटिव में D1 काम करेगा, नेगेटिव में D2, then D1. Similarly also पॉजिटिव साइकिल में D1 और D4 काम करेगा, then D3, then D4, D1 and so on. Got it? Clear? Sometimes they can ask you like draw the circuit diagram, and then they can ask of the derivation, right? So basically I'm not telling you. So what they can ask, जो बहुत frequently मणिपाल में पूछा जाता है, that is IC, or they can say कि average of current, that is I average. So half wave में the formula is by pi, center tap के में pi max by bridge type में by pi. Okay. Next they can ask you IRMS. IRMS for half wave rectifier by 2. Another one is by root. One is Imax by root 2. Okay. Next they can ask you, तो जो पूछा है मैंने सिर्फ वो करके मैं तो बता रही हूँ. Peak inverse voltage. So peak inverse voltage for the half wave rectifier Vs max, for the Vs max maximum voltage. Maximum कितनी peak में जा रही है. And bridge type के case also it is Vs maximum. Noted this time ये वाला formula and ये वाला, right? Next they can ask you the V average or V average one. So you know according to IDC RL, right? Correct? And IDC for half wave rectifier you calculate is Imax divided by pi. So it would be by pi RLs. For this one, 2 Imax by pi for this one. Now next they can ask you the rectification efficiency also, or simply efficiency. Formula for that, for the half wave rectifier 0.401 plus RF by RL. For center tap it divided by 1 RF by RL. Same is for this one. Now what is RL? RL is the load resistance and RF is the diode resistance. 90% of the time resistance होता. Okay, but अगर in case दिया हुआ है then you need to take it. If they didn't mention, then in that case you can assume. Next is the formulas for the filter. Okay, so in case of filter, if they have given, then they must give you the value for capacitor. So in this case, half wave rectifier formula is this one and full wave rectifier formula is this one.
check it in your handbook. I think this formula is given in your handbook also. Now for the filter also, they can ask you sometime the ripple factor. So if you want to calculate the ripple factor for the filter, for the particular filter case, then in that case these are the formulas. You can take the screenshot or you can note it down the formulas. Okay, so after this there are more formulas regarding the regarding the rectifier that I'll discuss in the next part. So this is your part 1, and in the next part I'll discuss these questions which is based on rectifier, Zener voltage and op-amp, all these questions, CMRR, and again the op-amp, the module 1 basically. With these questions are the questions which already comes in your exam, and these are the most repeated question. Okay, so if you have any query, if you have any doubt, please ask me in the comment box. I'll tell you the answer.